Hello friends, learn with fun bring new trick for you. Learn multiplication in 3 seconds. So we follow only two conditions. First one, we have to check the conditions first. First digits of both numbers should be same, and second, one place digit of both numbers should be complementary. So always remember sum of complementary digits is always 10. So take the example, I will explain with example. Complementary digits of 1 is 9 and 9 is 1. Complementary digit of 2 is 8 and 8 is 2. Complementary digit 3 is 7 and 7 is 3. Complementary digit 6 is 4 and complementary of 4 is 6. Complementary digit 5 is 5. Okay, so complementary digits are those whose sum is 10. 1 and 9 both are complementary of each other. 2 and 8 both are complementary each other. 3 and 7 both are complementary each other. 4 and 6 complementary each other. 5 and 5 both are complementary each other. And the sum of the complementary digits always 10. I hope it is clear to you what is the complementary digits. So बच्चों इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए दो कंडीशंस हमें चेक करनी है. फर्स्ट वन, द फर्स्ट डिजिट शुड बी सेम एंड सेकेंड डिजिट कॉम्प्लीमेंट्री. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, 53 and 57. 5 is same in both number 53 and 57. 74 into 76. 7 is the same in 74 and 76. 3 is same in 31 and 39. 12 is same in 126 and 124. So first condition is fulfilled. Now look at the another condition, that is sum of the digits is 10. 3 and 7 is a complementary each other. 4 and 6 complementary each other. 1 and 9 complementary each other. 6 and 4 complementary each other. So both conditions are satisfied. After checking the condition, we proceed further. So what's the trick here? Multiply predecessor and successor of same digit. Now second, write multiplication of one place digits. We follow only two steps. First one, multiply predecessor and successor of same digit. Second, write multiplication of one digit. Okay. Now I explain with the example. Look at the first example, 53 and 57. So both 5 is same in both numbers. So 5 is multiplied with the successor 5 and 6 into 30. 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है. तो 5 into 6 कितना आया? 30. Now look at the another example, 74 and 76. 7 into 8 is 56. 31 into 39. 3 and 3 multiplied by 4, 12. 12, 126 and 124. 12 multiplied by 13. 12 into 13 is 156. I hope it is clear to you. Now look at the second step. Now we multiply complementary digits 3 and 7. 3 into 7 is 21. 4 into 6 is 24. 1 into 9 is 09. बच्चे जब भी आंसर सिंगल डिजिट में आएगा तो उसको आपने, अगर जैसे 9 आया तो 9 को 09 लिखना है. नाउ 6 into 4 is 24. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. उसके बाद हमने आंसर कैसे फाइंड आउट किए. आंसर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था हमने, 53 into 57. 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से. और 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से. 30 and 21. तो आंसर कितना आ गया? 3021. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. लुक एट द अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 74 into 76. 7 into 8, 56. 4 into 6, 24. So your final answer is 5624.
Now look at the another example. 31 into 39. So 3 into 4, 12, and 1 into 9, 09. Your final answer is 1209. Look at the another example, that is 126 into 124. First 12 multiply by 13 and next 6 multiply by 4. So 156 and 156 and another is 24. So your answer is 15,624. I hope it is clear to you. बच्चों हमने किया कि 53 और 57 में क्या करना था, सिंपली 5 के बाद क्या आता है 6, 30 एंड 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया 20, तो आपका आंसर आ गया 30 देन 21। 74 और 76 में 7 सेम है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, आंसर इज 5624। 31 और 39 में क्या किया, सी दोनों सेम है, सी के बाद क्या आता है 4, 12 और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 से, 09, 1209। 12 और 126 और 124 में 12 सेम है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया 156, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 15,624 इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बच्चों इस वीडियो में हमने नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट क्या सीखना है, हाउ मैनी डू यू नो हाउ मैनी आईज स्पाइडर हैव? 8 eyes. Mostly spider have 8 eyes. Okay. Now vocabulary. Look at the vocabulary. Carp. Carp means complain or find fault. So sentence is accept things as they are and don't carp. तथ्यों को स्वीकारें और शिकवा शिकायतें ना करें। I hope you like this video. If you like, please subscribe my channel. Thank you.